इंटरनेशनल पंचायत, बातें ग्लोबल, दिल देश। Not even 0 to 2. I have seen 2 to 3 years of Yeah, I've experience. seen They that as expect well, you to right? have 10 Yeah. years of learning and wisdom within 2 to 3 years of experience for an entry level role. I think that's very unfair. वो देख के I was like, मुझे नहीं मिलने वाला है. I knew people, when you tell things like this, people usually go, "Arey, don't be negative, Yeah. or be optimistic." But बहुत optimism, thought आते हैं. this is not optimism. When This you is don't, pseudo optimism. yeah, You when you need to don't see know. anything, Yeah, this is not optimism. Like, let's be practical. This is purely pseudo optimism, because ये काम नहीं करता है. Optimism होने के लिए भी ना कुछ base चाहिए होता है. Now I can be like, हाँ, once you I have was cracked it, optimistic. once you have cracked it, you Once can I've say, cracked it, नहीं मुझे I'll tell you how I got into the role. That is also very important. मैं ऐसा नहीं कि मैं core finance roles में apply नहीं कर रही थी. हाँ, I used to apply for what basic operational roles, तुम्हारे accounts payable, accounts receivable, वैसे टाइप के roles. ठीक है, credit officer वो वाले roles. वहां पे भी उनको चाहिए होता है experience. yes, I was like, कुछ जाएगा. देर मतलब all doors are closed, मैं what do I do? Yes. करूँ तो करूँ क्या? ठीक है, मैंने तो घर पे बोल भी दिया था, देखो मुझे टैक्स रिफंड के इतने इतने पैसे आए हैं, आई एम सर्वाइविंग. जैसे खत्म होगा, आई रीच द $1,000 मार्क, आई यूज द रेस्ट ऑफ द $1,000 टू बुक ए फ्लाइट फ्रॉम सिडनी टू बैंगलोर एंड आई एम कमिंग होम. मम्मी पापा अभी बैंगलोर से उड़ीसा गए हैं फॉर द टाइम बीइंग, तो मैंने बोला चाबी रख के जाना वहां पे, यू नेवर नो व्हेन आई एम लैंडिंग होम. मम्मी ने चाबी रखा, शी लाइक, क्यों डर रहे हो तुम? विल सी हाउ इट गोस, वी आर हियर ना. मम्मी जगन्नाथपुरी के वहां पे गई होंगी. वो तो उनका तो चलता रहता है. एनीवे, लेट्स नॉट इवन गेट देयर. तो she's like, why are you so, मतलब अरे हम लोग हैं. I mean, yeah, I know you people keep spending. That is another thing ना. मैं survive कर रही थी, हाँ मैं survive कर रही थी खुद से, but I had support from the family. Everyone doesn't have that. Yes, तो absolutely. वैसा सिचुएशन होता तो मैं क्या करती? मैं अल्टीमेटली जाती ही वापस. Family is the biggest supporter, unsung heroes Absolutely. behind every international student journey. हाँ, They are the ones who very, support you. हाँ, और वो नहीं है, then बहुत you, मतलब वो कुछ नहीं drive नहीं आता, right? ना. You think that you have already lost the battle, but yeah, very very beautifully portrayed. Yeah. तो मैं वापस आ रही हूँ, तो बीच में आई वाज लाइक, हाँ मुझे, आई स्टार्टेड टू थिंक कि मुझे चाहिए क्या, हाउ डू आई गेट इनटू द इंडस्ट्री. बिकॉज मेरे लिए इम्पोर्टेंट था हैविंग नो एक्सपीरियंस, फिर नो बिना डिग्री भी, कोर फाइनेंस डिग्री नहीं, इट्स मोर ऑन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट साइड. तो हाउ डू आई स्टेप इनटू द इंडस्ट्री? I was like, कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस से मैं कहाँ पे घुस सकती हूँ? And the only possible place was a bank. Yeah. Because banks में बैंक हुआ, इंश्योरेंस हुआ, जैसे बूपा में भी मैंने अप्लाई किया था. Okay. For a very similar role, मतलब वही रोल था basically. But anyway, तो I was like बैंक. तो तब मैंने रिक्रूटमेंट एजेंसीज देखने चालू की. Oh. I got into this role through a recruitment agency. How does that process works like? Because this is new for me as well. So you looked into the recruitment agencies through LinkedIn. मतलब just explain the process. Like how does that work? Okay, so यहाँ पे recruitment agencies बहुत चलते हैं. ठीक है, and a lot of people get their, बहुत लोगों को मिलता है मतलब recruitment agencies से. मैं अपना तो अप्लाई कर रही थी लिंक्डइन पे और ग्लासडोर पे. आई हैव यूज्ड एंड मिसयूज्ड ग्लासडोर लिटरली. ठीक है. ठीक है, तो वो सैलरी देखने के लिए वो देखने के लिए, कंपनी रिव्यूज देखने के, विल कम टू दैट. आई हैव रिटन उसके लिए, जॉट करके रखा है मैंने सेपरेटली. दैट विल कम. तो हाँ, तो मैंने, और रिक्रूटमेंट एजेंसीज पे इतने देर सो, मतलब देर सो फुल विद एप्लीकेशंस.
कि वो भी रेस्पॉन्ड नहीं करता है। इमेजिन योर पोजिशन, Yeah. लिंक्डइन पे आप अप्लाई करते हो, ग्लासडोर, सीक और इंडीड मेरे लिए कभी काम नहीं किया। आई डोंट नो व्हाई पीपल गो गागा अबाउट सीक एंड इंडीड, दे नेवर वर्क मेरे फॉर लिए भी मी। नहीं करा। मेरे LinkedIn लिए भी work नहीं for me. करा। टू एन एक्सटेंट यस, कम से कम कुछ कॉल्स तो आए हैं, Yeah. ठीक है, बट इंटरव्यू तक इन्हीं लोगों ने लिया है मुझे। हेज Okay. रिक्रूटमेंट यहाँ पे है, यहाँ का बहुत पॉपुलर है। Okay. रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी, देयर आर अदर एजेंसीज जिनको मैं भेजती थी, अपना सीवी अपलोड करती थी, रोज अपडेट करती थी, नो रेस्पॉन्स व्हाटसोएवर। देन आई कनेक्टेड विथ हिज, द मोमेंट आई नो दैट देयर इज समवन टेकिंग माय कॉल, हाँ वो रेस्पॉन्ड कर रहा, धीरे कर रहा, लेकिन कर रहा, रेस्पॉन्स Correct. आ रहा है मुझे, दैट इज इम्पोर्टेंट। Yes. आई वाज लाइक गुड, दिस इज द मौका, मौके पे करो चौका। Choka. ठीक है। I think you hit a sixer, not even a four. ना, See, NAB is a sixer any day. एनी डे, Any day. ठीक है। तो शी रेस्पॉन्डेड, शी वाज लाइक, हाँ इस उस, तो दैट इज व्हेन शी टोल्ड कि यहाँ पे ना, देर आर, आउट ऑफ दिस बिग फोर बैंक्स, नैब और वेस्टपैक are Hmm. the only two banks which take applicants, which accept applicants on a visa. Oh, yeah. You answered my next question as well. Because that's a myth, right? People say that you can't get into the banks on your, like, I think temporary visa after you graduate. You from the student, you go into Bridging. like bridging, obviously, but you get the temporary graduate हाँ हाँ visa, हाँ right? हाँ हाँ, yeah yeah. So that's what happened with me, and and mind you, when I applied to NAB, I was on a bridging visa. Oh my They took me on God. bridging. And just on that, so your position came to you from the agency or you searched it on LinkedIn? It came from the agency. Agency. That उनके वेबसाइट से that's आई, crazy. Like getting it on bridging is another level because I've heard so many another people that level. कि वो reject कर देते हैं just by seeing that you're on a bridging visa. Hmm. Oh my God. Like because I know what it means. So you're one of the exceptions one, right? Or maybe, it's I won't say you got lucky because what happens, right? People luck मतलब बोल देते हैं it's luck. But I think it's the hard work, it's the consistent, approach that you follow कि you are applying and वो एक बार जब चमकता है ना तो लोगों को लगता है लक है बट पीपल फॉरगेट दैट वो पीछे का हार्ड वर्क वो स्ट्रगलिंग डेज They वो undermine your struggle. स्लीपलेस नाइट्स एंड मुझे लगता है कि Nights. बस एक दिन हीरा मिल गया. It doesn't happen that way, right? You are Nah, digging that mine every single day and every day. finally you grab that diamond Grab but the people hira. just वो उनको लगता है कि भैया वो बस हीरा मिल गया है बहुत लकी है. But I think it's a big thing but I I, think it's your hard work. I am glad you said that. I mean, thank you for saying that because that's not something you usually get to. Yes, I know I'm fortunate in Yes. many ways, but like you mentioned, those sleepless nights, Yes. those matlab, extremely depressing afternoons and days, उठो and apply करो and वापस सो जाओ, you get tired and it's Yeah. exhausting. It's emotionally, So mentally many very rejection exhausting. and you also tend to not share it with your parents and close ones because you feel that you are mature enough आप उन्हें stress नहीं tension नहीं देना चाहिए. You're always carrying that big smile on your face but behind that so much is going on जो सिर्फ आप ही समझ सकते हो कोई नहीं समझ सकता है. And that is why I wanted to point that out because having gone through something similar but obviously your case is completely different because you don't have a job. मेरे पास job थी बट उसमें भी मैं अप्लाई कर रहा था. आई वांटेड टू स्विच बट पीपल जस्ट सी कि मेरा लग गया बट लाइक फ्रॉम माय कंपनी पीडब्ल्यूसी मेरे को आई डोंट नो 5-6 कितने ऑलरेडी रिजेक्शंस आ चुके हैं. आई चुके थे. गॉट देयर एट 7th टाइम. So it was that attitude कि I kept on applying even after facing 7 rejections कोई 7 नहीं. rejections, And that you is get that something. attitude right कि नहीं अभी तो कोई नहीं क्या होगा एक और रिजेक्शन आ जाएगा. एक बट और आ जाएगा. वो अप्रोच होना बट वही है वो 7 नहीं दिखते वो 8वां जो एक्सेप्टेंस है वो दिखता है वो बट वो एक्सेप्शन होता वही दिखता है. हाँ वो नहीं दिखता. सो आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दैट it's a journey that it's a process and you should never give up. अप्लाई करते रहो कंसिस्टेंटली एंड आई थिंक मैंने ये नोटिस अपने में करा एंड मे बी लाइक यू सेड दैट यू वेंट थ्रू द रिक्रूटमेंट एजेंट
जॉब फर्स्ट डे आपका जर्नी रहता है अप्लाइंग का, एंड द लास्ट डे दैट यू गेट अ जॉब, इट्स अगेन यू आर मेच्योर्ड, लाइक आपका अप्लाई करने का तरीका, और सारी सारी चीजें वो एकदम completely डिफरेंट हो जाती है, यू आर ट्राइंग एवरीथिंग, बट व्हाट आई फील इज डोंट ट्राई द सेम थिंग, कीप चेंजिंग योर अप्रोच। लाइक मैंने देखा लोगों को, वो क्या बोलते हैं, पॉइंट में इफ आई एम रॉन्ग, वो क्या करते हैं, and I think that's a lazy attitude which I don't like, and मुझे बहुत गुस्सा आता है when someone is someone reach out to me and बोलता है कि यार मैंने ये कर दिया, but मैंने अप्लाई करा, मेरे को इतने रिजेक्शंस आए हैं, but what they do is like it's such a lazy attitude कि एक ही रिज्यूमे है, नो एडिट, 500 जगह भी अप्लाई कर दोगे, इट डजंट वर्क लाइक दैट, राइट? आपने जॉब डिस्क्रिप्शन तो पढ़ो कि क्या है, क्या मांग रहा है, क्या स्किल सेट्स मांग रहा है, ट्वीक योर रिज्यूमे। इतना क्या लेजीनेस है कि सेम रिज्यूमे एक बना दिया है, जो 1947 में एक सेम रिज्यूमे बना दिया, उसी को आप अप्लाई करे जा रहे हो, एंड देन दे कम विद द नंबर, अरे देखो मैंने 500 जगह अप्लाई करे, रिजेक्शन आया है। Doesn't सो work. आई थिंक दैट्स, इफ आई एम करेक्ट, दैट्स व्हाट यू डिड, you change your resume depending Um, on, or same, you went with the same approach. okay. I have done the same thing. I'll not lie. Okay. But you know what? I changed every time a cover letter. Oh yeah, that's very much important. And again, I think that's a lazy Because attitude. लोग कवर लेटर बनाना नहीं चाहते, वो it's not a compulsion, but it's just that तो हम extra नहीं effort that we put. करेंगे. हाँ, हम करेंगे नहीं, वही अब go हाँ. above and beyond, भैया like जाना नहीं चाहते। अभी एआई है सामने तुम्हारा. आई टेल यू व्हाट आई डिड. मैं बैठ के पूरा पूरा मैं लिखती भी नहीं थी कवर लेटर. हाँ, मैं सिर्फ एंड में मैं चेक करती थी, हाँ ये मैंने एक्चुअली किया है, किया है, किया है. चैट यस, जो जीपीटी नहीं किया है उसको जिंदाबाद। रिमूव करो, जिंदाबाद. Yeah. So I think it's also that going above and beyond wala approach na. But I think for you not changing your resume kind of makes sense because you were applying मेरे पास some चेंज similar करने के role. लिए कुछ कुछ था था नहीं. नहीं. I get your point. मैं क्या चेंज करती? बिकॉज all I could show is my customer service experience at David Jones. मैं Which you उसको already कैसे did. मॉडिफाई करती? Yes. Yeah, I लेकिन agree. कवर लेटर में मॉडिफाई कर सकती थी Yes. डिपेंडिंग अपॉन द जॉब डिस्क्रिप्शन. Yes. So I will tell you what I used to do. मेरे टाइम में chat GPT नहीं था. नहीं When I was going through that process, like I think it came late. एंशिएंट But लोग. ancient लोग, बूढ़े लोग. But what I used to do, मैं JD पढ़ता था, and अच्छा. वहाँ पे पढ़ता था उन्हें चाहिए क्या. So they used to write those skill sets, right? So for example, if they're saying team player है, या ये कोई सॉफ्टवेयर, मतलब एक कोई उन्हें टूल चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, या some kind of like communication, leadership, all those, वो लिखा होता है आपको जेडी में. So then I used to review my resume and कि ये कहीं मेरे एक्सपीरियंस में पोर्ट्रे हो रहा है. अगर नहीं हो रहा है तो मैं ट्वीक करके वर्ड डाल देता. फॉर एग्जाम्पल, मान लो उन्होंने पावर बीआई सॉफ्टवेयर मांगा, तो मैं यस. होगा भी नहीं ना एक्सपीरियंस में, तो मैं ट्वीक करके लिख दूंगा कि मैंने डेटा एनालिसिस करा यूजिंग पावर बीआई, एंड आई यूज्ड टू पुट दैट वर्ड इन, बिकॉज हाउ मच रिसर्च दैट आई हैव डन, मैंने रियलाइज करा है कि फर्स्ट स्क्रीनिंग जो होता है, मोस्टली पीपल आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, एआई. सो वो आपके रिज्यूमे में वो की टर्म्स ढूंढते हैं यस. जो उनको मैच करते हैं. सो बेसिकली व्हाट द एआई इज डूइंग इज, हमारी ये रिक्वायरमेंट्स है, ये स्किल सेट चाहिए, ये रिज्यूमे है, लेट्स ट्राई टू मैच, वो स्किल सेट्स मिल रही है कि नहीं मिल रही है. एंड पीपल से दैट, अरे हमें आता तो है, आना एक बात है, बट क्या आप अपने रिज्यूमे पे दिखा रहे हैं? बिकॉज आई फील, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अप्लाइंग एंड मैंने आपका रिज्यूमे देखा, तो मेरे लिए योर फर्स्ट इंप्रेशन इज दैट पीस ऑफ पेपर, एंड दैट इज ऑल्सो विच आई एम नॉट डूइंग, दैट इज समथिंग विच इज समथिंग डन बाय द एआई. तो एआई के लिए आपका इंप्रेशन पहला आपका वो पीस ऑफ पेपर है. अगर उसमें आप आपको अपने आप को सेल नहीं कर सकते ना, तो इंटरव्यू की तो बात ही नहीं होती. यू हैव टू सेल योरसेल्फ ऑन दैट पीस ऑफ पेपर, एंड आई थिंक यू नीड टू पुट अ लॉट ऑफ होमवर्क कि आप उस पीस ऑफ पेपर को अपनी आइडेंटिटी कैसे बना सकते हो. एंड एब्सोल्युटली. दैट इज व्हाई आई से दैट ऑलवेज ट्वीक, थोड़ा चेंज करो, थोड़ा कुछ उनको दे दो कि हाँ यार ये चीज इसने करी हुई है, एंड यू कैन ऑलवेज डू दैट. एंड व्हेनेवर समवन कॉल्स मी फॉर अ रिव्यू, मैं उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ आइडिया दे देता हूँ, एंड देन दे आर लाइक, हाँ यार ये तो कर सकते, करा नहीं. बिकॉज आई थिंक you need to think from that perspective कि how I fit in that company. and मेरे को लगता है कल्चर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि companies always ask you, do you fit in their culture? So Yeah. why do you think it is important, and what is when they talk about culture? Like, because NAB का culture मतलब जाना जाता है. So what is NAB looking in the people? Like,
what sort of culture, because इंडिया में होता है रट्टा, नॉलेज आता है, टेस्ट लेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, थ्योरी एकदम डेफिनेशन, वो बोलो। कहीं के मैंने तो ऐसे भी इंटरव्यूज देखे इसमें सम सॉल्व करवा के देख लेते हैं कि ऐसे भी सुना है मैंने। बट यहाँ पे मेरे सारे इंटरव्यूज ऐसे गए हैं, मोर अबाउट द कल्चर, डू यू फिट इन, वो स्टार मेथड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, सिचुएशन, टास्क। Yes, yes, तो yes. why do you think it's that, and what is the culture, like what are the qualities that one should, so I think these are different from the your what do you say, hard होता है, soft and hard skills होता है, I don't know. हाँ, So soft जो skills. जो soft skills होते हैं वो आई थिंक कल्चर को इम्पैक्ट करती है। सो NAB इज नोन फॉर द कल्चर। तो Actually, I तो was कैसे about to आपको, come to that. या सो कैसे वो हेल्प करा यू टू गेट इनटू दैट? Uh, Before we go there, um, I would like to talk about the other interview I gave. ओके, ठीक है? यस, And how on earth I got NAB wala interview. ओके, Because that is, matlab, I think that will play some significance here. ठीक ओके, है? Um, पहला इंटरव्यू NAB का एक सब्सिडरी है. It's a digital bank called UBank. आई हैव हर्ड अबाउट दैट, या। ठीक है? इनफैक्ट मेरा एक जस्ट टू कंफर्म आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, इज दैट द बैंक जो सेविंग्स पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देता है? इज दैट द वन? हाँ, वो देते हैं, काफी इंटरेस्ट देते हैं. उनका मैं हमेशा डाइसी फील करता था कि यार सुना नहीं है इसमें अकाउंट नहीं नहीं, खोलो कि, they're बट आई good, थिंक they're वो good. सेविंग्स पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं। हम्म. ज्यादा नहीं होता बट ठीक है, थोड़ा भी ज्यादा है। तो हाँ, कुछ तो है, मतलब या या समथिंग बेटर देन या नथिंग. या कैरी तो ऑन, या। एनीवे, तो मैं पहले मुझे, तो हाँ, हेज में से इंटरव्यू आया भी कैसे? पहला पहला इंटरव्यू मेरा नैप वाला था. ठीक है? ओह, इट वाज नॉट इवन एन इंटरव्यू. पहला राउंड था मेरा, द रिक्रूट, the lady was like, एग्जीक्यूटिव, and I was very candid with her. I was like, I don't understand why I'm not even getting interviews. I was frustrated at that point. वाज इट मेरे अ मुंह में जो भी टेलीफोनिक? आता था. हाँ, टेलीफोनिक. ओके, तो आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड, मैंने फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया उस पर, बेचारी पे. लाइक, Nicole, I have no idea. I mean, I don't understand why I don't even get interviews. I just need an interview. That's what I need. The rest will be on me. So she's like, अच्छा, ठीक है बेटे. हाँ, टुमारो, कल हम लोग का एक ना हेज का ना इंटरनल इंटरव्यू कर. ठीक ओके, है? ओह नाइस, दैट इज वेयर द कंसल्टेंट इंटरव्यूज यू. उसके पहले शी सेंट मी अ सॉर्ट ऑफ अ टेस्ट. ओके, व्हाट ठीक सॉर्ट है, ऑफ वो टेस्ट? देखने के लिए, मतलब टेस्ट में ये था, जैसे बैंक में क्या होता है ना, यू हैव टू, मतलब फोन पे सुन के, हेडफोन्स पे सुन के, यू हैव टू टाइप, एक्यूरेसी देखना चाहते हैं वो, ओके, वगैरह वगैरह. हाउ डिटेल्ड आर यू, अटेंशन टू डिटेल, वो सब चीजें देखते हैं. ओके, तो वैसे ही कुछ था. एंड शी इज लाइक, विल हैव एन इंटरनल थिंग. लाइक, अच्छा. तो वो होने के बाद शी इज लाइक, ओके, यू ऑल्सो क्लियर द टेस्ट. ठीक है? अगले राउंड ऑफ इंटरव्यू में तुमको अपने आप को क्वेश्चंस होंगे, यू टू जस्ट क्लिक ऑन द लिंक, क्वेश्चंस होंगे. एंड जो आते हैं, मतलब यू रिकॉर्ड योरसेल्फ बेसिकली. एंड उस पे 11 क्वेश्चन थे. मैंने पहले क्वेश्चन पे ही आई थोड़ा मेस्ड अप. ओके, आई वाज लाइक, गया. आई वाज लाइक, गया, सत्यानाश, गया, ये तो गया. भूल जाओ ना अब, अभी 1 साल तक. ठीक है? आई वाज लाइक, ठीक है, कोई बात नहीं, अगला इंटरव्यू तो आ रहा है. दैट वाज यू बैंक. फिर मैं यू बैंक का, उनका ना ग्रुप एंगेजमेंट डे था, तो वहां पे गए. वहां पे so हुआ. you went, you're saying like हाँ, physically? फिजिकली, हाँ, ये Okay. फिजिकल था. Hmm. यू बैंक वाला. एंड ब्यूटिफुल ऑफिस. Hmm. देख के एकदम मजा आ गया, देख के, मतलब Fancy. पीपल वेरी फैंसी, पीपल वेर अमेजिंग. Okay. मतलब इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना, कि हाउ आप जब Yes. इंटरव्यू देने जाते हो, हाउ यू आर मेड टू फील. बिकॉज इट इज नॉट जस्ट देम इंटरव्यूइंग यू, इट इज ऑल्सो द अदर वे. Yep. The way they make you feel talks a lot about their company culture. Definitely. ठीक That's a है? selling एंड point. या, एंड यू बैंक वाज इनक्रेडिबल. तो लेकिन वहां पे क्या हुआ, वहां पे जो बाकी बाकी whoever else had come, other applicants,
उनका पहले से ही बैकग्राउंड था एंड स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स बेसिकली। Okay. तो वो गया। आई Hmm. वाज लाइक शिट, गया, क्या करूं But you अब मैं got that मैं तो experience, बस। right? सॉरी, बेग योर पार्डन। You got that experience, right? वो इंटरव्यू जर्नी, का, यस। जब कुछ नहीं यस, आ रहा है तो वही एक्साइट करता है कि यार कुछ नहीं। एग्जैक्टली, कुछ तो आया। कुछ तो आई आया वाज तो you ग्रेटफुल feel फॉर द positive, right? कि इंटरव्यू। हाँ, something is happening. एक्चुअली एक्चुअली आई एम लाइक अभी मैं इनके रेडार में हूँ, अभी ये लोग मुझे कम से कम इंटरव्यू लाके देंगे, तो Yep. बाकी का काम मेरा है। Hmm. तो हुआ, फिर एक हफ्ते हो गए, मैंने फिर भी आई कॉल्ड द कंसल्टेंट, आई वाज लाइक रिक्रूटर बेसिकली, तो आई वाज लाइक शी वेंट ऑन लीव, शी सिक लीव पे। फिर अगेन आई कॉल हर एक हफ्ते बाद फिर से, शी डिडंट टेक माय कॉल। आई वाज लाइक अरे यार, फिर सुबह उठो, यही करो, वो करो, इनको फोन करो, उनको फोन करो, फलाना करो, फलाना करो। फिर उसको भी फोन कर ही लेते एक बार, देखते हैं क्या हुआ, मतलब आएगा नहीं पता है अपने को, दिमाग में है मेरा पहले से इट्स नॉट हैपनिंग। बट देन शी डिडंट टेक माय कॉल। आई वाज लाइक फोन नहीं लिया, फोन नहीं लिया मेरा। लाइक हाँ ठीक है, बैक टू एप्लीकेशंस एंड आई वाज Yeah. कंटिन्यूइंग। Immediately after that, after I disconnect, I get a call from another consultant. Okay. She's like, hi, am I speaking to Sonal? I'm like, yes, you are. Congratulations. Sorry, I'm Bethany. Congratulations. You have been accepted by NAB. Like, what? Oh, I couldn't even imagine that moment, right? Okay. Oh my God, just explain those feelings, please. uh, I was waiting for, obviously, obviously, you said thank you and whatever, whatever. I couldn't wait to disconnect the call. मुझे इतनी एंजाइटी हुई तब, I was like, it it took me 2 days. It took me 2 days to absorb it, to Okay. accept it. Yeah, yeah, I know. लिटरली Pinch 2 दिन yourself. पूरे लिए लिए मैंने। और जब तक ऑफर लेटर नहीं आता, you don't believe, right? साइन नहीं कर ना, रहे कि नहीं हो। ना, फिर वो धीरे धीरे आया, मतलब बाकी सब, इवन ऑफर ऑफर लेटर आने के बाद भी आई वाज स्टिल डाउटफुल के, बिकॉज नैब का बैकग्राउंड चेक बहुत स्ट्रांग होता Yeah. है। प्रोबिटी उनका क्लियरेंस दे गिव इट टू अ थर्ड पार्टी एंड वो आपका सारा बैकग्राउंड चेक करते हैं। वहां पे Hmm. भी आई वुड लाइक टू पॉइंट समथिंग आउट वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आके ना स्टूडेंट्स क्या करने लगते हैं। आई एम सॉरी इफ आई एम डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक, यू कैन Yeah, no, no, टोटली it's रिमाइंड very मी ऑफ no, द no, no, क्वेश्चन no, दैट यू no, 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 आस्क्ड no, no, अर्लियर। no, 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 no. ठीक है, तो क्या हुआ, बैकग्राउंड चेक, ऑब्वियसली यू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, योर वर्क हिस्ट्री एंड Yeah. योर एवरीथिंग। तो वहां पे थर्ड पार्टी के वेबसाइट में व्हेन आई अपलोडेड माय रिज्यूमे एंड फिर डिटेल्स मैंने वापस वो किए, वापस डालने पड़ते हैं डिटेल्स whatever. Turns out you cannot change it afterwards. एक बार जो डाल दिया. एक बार जो डाल दिया वो डाल दिया, बिना सबमिट करने से पहले भी आप चेंज नहीं कर सकते। Okay. You हाँ, need to be सबमिट very करने के thorough. बाद चेंज नहीं कर सकते वो अलग चीज है, लेकिन सबमिट करने के पहले भी आप चेंज नहीं कर सकते, दैट इज समथिंग। Okay. एक्चुअली मैंने कांड मैंने ही करा था। You messed up. आई मेस्ड अप इन द सेंस, मेरे रेज्यूमे में देयर वर दिस 2-3 एक्सपीरियंसेस व्हिच आई डिडंट वांट टू ऐड, बिकॉज मैंने Okay. बहुत कम स्पैन के लिए काम किया था। Hmm. And there were very toxic experiences as well. Let's not get there. Hmm. But I don't want to put it because 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, it looks bad. Yeah, yeah. My मतलब डेविड जोन्स वाले स्टोर की जो मैनेजर थी, I mean, I'm so fortunate I got to work under her. Brilliant, brilliant woman. So she was like, Sunny, why don't you remove those two? मैंने बोला Hmm. तो मैं इसके जगह करूं क्या? आई यूज्ड टू डू उबर इट्स एट वन पॉइंट। Oh. मैंने वो भी करा है, ऑन अ बाइक, वो भी करा Ah, है। like वो bicycle वाला? Electric? हाँ जी, Oh, हाँ, इलेक्ट्रिक। nice. ठीक है, आई यूज्ड टू लाइक दैट। Yeah, it मुझे, is fun. It is good. हाँ, साइकिल पे जाओ, एक्सप्लोर करो तो सिटी. बहुत, तो आई वाज लाइक मैं इसको इंस्टेड ऑफ जून से नवंबर मैं उसको अप्रैल से नवंबर कर दूं क्या? शी लाइक हाँ कर दे, चलेगा। यहाँ पे सबमिट करने के बाद मेरे दिमाग में आ रहा है कि Oh my मुझे तो God. भैया
मुझे तो भैया एबीएन ही मिला था मेरा मई के महीने में, तो मैंने अप्रैल से कैसे डाला? and you can't एंड नाउ change आई एम that. नॉट एबल टू चेंज इट. द पैनिक, द मतलब सब पैनिक मिल मतलब गया एंड सब एक मोमेंट पे सब कुछ होने के खत्म छिन गया. बाद आई एम लाइक, इतने दूर तक आई हैव कम सो फार, Yeah, एंड नाउ इफ एवरीथिंग शटर्स, तो मतलब सब खत्म. अलग, सब खत्म. Crazy. Yeah. But तो then क्या हुआ? बट देन हुआ ये कि मैंने कंसल्टेंट को फोन किया, मैंने थोड़ा उसको मॉडिफाई किया अपने स्टोरी को. हाँ, मैंने बोला कि गलती से डाला है. yeah, फिर उन्होंने बोला कि थर्ड पार्टी को फोन करो, उनका हेल्पलाइन, तो yeah. दे वर ऑलवेज, मतलब ऑलवेज देयर टू रिसीव, टेक कॉल्स एंड एवरीथिंग. तो मैंने उनको बोला कि मैंने गलती से डाल दिया. मैं, द थिंग इज रेज्यूमे में भी वही था. मैं उनको ये कैसे चिपकाऊ के रेज्यूमे में क्यों डाला था? Hmm. वो भी कुछ स्टोरी बना के बोला था मैंने, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है. सो दैट्स हाउ आई गॉट अवे विद इट. But ठीक है. finally everything तो मैं worked out. स्टूडेंट्स को, हाँ, मैं स्टूडेंट्स को जो आते हैं यहाँ पे, जो अप्लाई करते हैं जॉब, अक्सर क्या होता है, शुरुआत शुरुआत में हम लोगों को भी करने बोला गया था कि यू फेक योर एक्सपीरियंस. Yeah, काइंडली डू नॉट गेट इनटू दैट. yeah. या उसमें घपलेबाजी में मत जाओ ही पड़ो. हाँ, ना. मत पढ़ो, कुछ नहीं मिलेगा. Yeah. उल्टा हाँ, ये मतलब इंस्टेंटेनियस ग्रेटिफिकेशन मिल जाएगा आपको कि कहीं पे, हाँ भैया कहीं पे लग गए हम. Longer run बट में. इवेंचुअली ऐसे जब व्हेन यू एंटर इनटू वन ऑफ दिस बिग प्लेसेस जहाँ पे बैकग्राउंड चेक्स, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत होता है, Yeah. And intense one. वहां इंटेंस वंस, Yeah. वहां पे आप कैसे जस्टिफाई करोगे? Yeah. Agreed. Even I went through the same. Like, मतलब वो प्रोसेस में वो लोग क्या पूछ रहे हैं भाई, मेरा रहने का हिस्ट्री सब कुछ जानना है उन्हें. Like it was so intense, the background check that happened for me as well. But yeah, thank you for bringing this up. I think yeah, this is very much important. And yeah, यहाँ पे mess up कर दिया तो क्या फायदा, right? You went through everything, सब clear कर लिया, अपने merit पे है, कैसी mistake पे है, सब कुछ खत्म हो सकता है. But thank you for bringing that. But यही मुझे लगता है कि झूठ बोल के आप बहुत ज्यादा, मतलब यू कांट लास्ट दैट लॉन्ग. इट्स again, डिफिकल्ट, नो. see, इट्स, आई मीन, यस, झूठ बोलना, you need इट to इज be अ a good, स्किल, लेट्स बी you need to be वेरी a, you ऑनेस्ट. need to be a very good liar. I won't lie, I do lie. Yeah, I मैं have lied so much, so much. But I think मतलब इन चीजों में झूठ नहीं बोलती. in झूठ में I'm talking about the interviews only. Like interviews में हाँ, like क्या कि if they ask you some question, I think you should always have that confidence. Like reply with grace, right? एकदम confidence के साथ. मतलब you have to fool that person basically. If you go on the back foot, little they sense that tension, right? उन्हें लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे अब कुछ थोड़ा सा घबरा कुछ, गया. हाँ. Even if you don't know something, मतलब कॉन्फिडेंट के साथ बोलो, नहीं करा है बट मैं कर सकता हूँ, मैंने समथिंग सिमिलर करा है. हाँ, बट आई थिंक that process requires you know lot of research, very like proficient with your field, with your like area. तभी ये हाँ. सब आता है. Just be very confident. Confidence, मेरे को लगता है confidence the key. हम्म. तो हाँ, we were talking about the culture. तो कल्चर कैसे आया इसमें? How did culture play the role? And what sort of सॉरी. culture are they looking for? मतलब Oh yeah, question, NAB, NAB. नाम what sort of culture they are looking for? द गुड पार्ट, और ये चीज मेरे भैया ने भी बोला है मुझे. भैया मेरे से 11 साल बड़ा है. He's got at least 12-13 years of corporate experience. ठीक है, तो Okay. इट्स कमिंग फ्रॉम हिम. Mm-hmm. तो ही आस्क्ड मी इंटरव्यू कैसा गया. तो मैंने बोला ये पूछा. इज लाइक गुड. मैंने बोला क्यों? बिकॉज देर फोकसिंग ऑन ऑल सॉफ्ट स्किल्स. उनको पता Yeah. है टेक्निकल में वो आपको ट्रेन कर देंगे. दैट इज द, मतलब ये अच्छी कंपनी का एक ग्रीन फ्लैग है. Yes, they will train you. ठीक है, ठीक है. टेक्निकल का उनको फर्क नहीं पड़ रहा है. दे जस्ट वांट टू सी हाउ यू एज अ पर्सन इज गोइंग टू ब्लेंड इन. Yep, agreed. एंड हाँ, तो दैट वाज दैट. डिड आई कवर Yeah, वाज आई so सपोज्ड yeah, टू? yeah. No. Absolutely. बहुत important point cover करा. So if I may like add few things, what I feel like from my little experience is your degree doesn't matter that much. Degree से आप again the soft skills, I think जो मुझे help करा है, obviously अगर आप technical background मतलब उसी field में apply कर रहे हो, that just gives you an edge. कि चलो आप फाइनेंस में अप्लाई कर रहे हो तो आप फाइनेंस की अपनी डिग्री कर रखी है, एक एज मिला, आपके पास फाइनेंस में एक्सपीरियंस है. बट आई थिंक व्हाट मैटर्स इज
दो सॉफ्ट स्किल्स की आप टीम प्लेयर हो कि नहीं हो, आप टीम के साथ काम कर सकते हो कि नहीं हो। यस अकेला ये यस दैट्स एटीट्यूड वेरी नहीं होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट है, भाई नहीं होना मैं चाहिए। अकेला हूँ सब कुछ हूँ। दैट एटीट्यूड नहीं। शुड नॉट बी देयर। क्या आप में लर्निंग एटीट्यूड है, वो आपको अपने आंसर्स पे दिखाना होता है दैट यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, यू आर विलिंग टू लर्न। एंड फिर होता है, मैंने एक्सपीरियंस करा है व्हाट आई यूज्ड टू डू। हर कंपनी की यहाँ पे हर जगह होती है कि वैल्यूज होती है, हर कंपनी बोलते हैं दीज आर द हम्म। वैल्यूज दैट यू स्टैंड फॉर। यू यू नीड टू, आई विल से अगेन, you need to showcase the values in your answers anyhow. Yes. It can be, care attitude, it can be, that learner attitude, it can be that curious attitude, values जो भी होगा, but you need to match your answers to those values. तभी कंपनी को लगता है कि यार ये जो है ये हमारे कल्चर में फिट इन करेगा। फिर वो डाइवर्सिटी की बात हो जाए या कुछ भी बात हो जाए, बिकॉज यू लाइक योर ब्रदर एंड लाइक ही सेड अ वेरी वैलिड पॉइंट कि कंपनी को ये पता होता है कि अगर सामने वाला सीखने वाला है तो हम सिखा देंगे, because Hmm. what you learn in the college is completely different From of what you what you actually work, right? do. What you work, and this has happened with me with my bachelor's as well as with my master's. मैं दूर दूर तक रिलेटेड नहीं काम करता हूँ। जो मुझे हेल्प करता है वो है रिपोर्ट मेकिंग, जो असाइनमेंट्स बनाए ना, अच्छा। so I do sometimes make reports, so that helps, that I know how, yeah, you have to write the reports. But I think everyone should portray that attitude, डूडाई वाला, कि भाई मैं कुछ भी हो, you just give me, मैं कर लूंगा। हाँ सिखा वो देंगे, बट यू नीड टू शो दैट कि भाई यू जस्ट गिव मी हाँ दैट अपॉर्चुनिटी एंड एग्जैक्टली। आई एम देयर टू शो यू दैट आई एम देयर टू परफॉर्म। हम्म आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स इन एनी कंपनी, कि आपके पास वो एटीट्यूड है कि नहीं। एंड आई फील दैट यू शुड ऑलवेज बी हम्बल एंड विलिंग टू लर्न, बिकॉज आई फील नो मैटर व्हाट यू आर ऑलवेज रिप्लेसेबल in the corporate world. एब्सोल्युटली Remember this thing that एब्सोल्युटली। you are always replaceable, no matter whether you are at the director level or at the junior level. एट द बेस। हाँ। You can never be the best. You are always replaceable. Just have that hunger, learning attitude, and keep learning because things are evolving every now and then. एंड आई थिंक मेरे केस में यही था यार, मेरे इंटरव्यू में स्टार मेथड, अपने टीम को लीड करा, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कैसे करें। माय रोल वाज वेरी टेक्निकल, बट मेरे क्वेश्चंस कैसे थे, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करा, मैनेजर और उसमें लड़ाई होगी तो कैसे डील करते हैं, या ऐसी सिचुएशन में कैसे करोगे, या आपको बाहर मतलब ऑफशोर टीम्स के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा आफ्टर आवर्स, आर यू विलिंग टू डू दैट। तो मैंने ना बहुत सारी पंच लाइन मार दी थी वैल्यूज रिलेटेड, कि आई बिलीव इन पीडब्ल्यूसी वैल्यू, ये वाला वो सारा। तो मैं अपना रिसर्च और होमवर्क करके गया था। आई थिंक दैट हेल्प्स, आप दिखाते हो कि यार आपने अपना होमवर्क करा है। फॉर एग्जाम्पल ये मतलब मेरे को कभी कभी लगता है कि कितनी सही चीज है कि यू आर अप्लाइंग फॉर सब कंपनी एंड यू आर शोइंग दैट इंटरव्यू कि यू आर सो इंटरेस्टेड कि आपने अपना होमवर्क करा है, उनकी वैल्यूज को स्टडी करा है, या लेटेस्ट उनकी न्यूज को स्टडी करा है, वो एक अलग एक्चुअली। टच लेके आता। आई कैन गारंटी यू नॉट मेनी पीपल डू दिस। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू डू, बट नॉट मेनी पीपल डू दैट। So I think culture in Australia plays a very important role. This is what I have realized compared to India. India में more या focus is given on the technical. Other non-technical fields के लिए different हो सकता है, but I feel for the technical more focus is on the your not the soft skills. या But एंड yeah, इंटरव्यू में, सॉरी, इंटरव्यू में भी मतलब जो 11 क्वेश्चंस उन्होंने दिए थे, दे आस्क्ड अबाउट माय एक्सपीरियंस जो मैंने एक साल का किया था। yes. जनरल क्वेश्चंस थे, बट आई हैड टू टेक रेफरेंस फ्रॉम दोज Hmm. बिकॉज बैंक का रोल है। आई एम अ कस्टमर एडवाइजर, एडवाइजर ऑपरेशंस बोलते हैं उनको, मतलब बेसिकली ऑन कॉल्स ऑल डे। Mhm. एंड यहाँ पे व्हाट दे एब्सोल्युटली रिक्वायर, मतलब देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर दिस, इज द फैक्ट दैट दे आर लुकिंग फॉर interpersonal skills obviously, Yes. and how you communicate, communication कितनी strong है आपकी, Yep. plus मतलब बैंक का रोल है। there will be times when बहुत financially distressed customers will either call you or you have to call Yep. them, Mhm. you have to put them under hardship plans or whatever it is. तो Mhm. वो empathy देखते हैं, empathy, Yeah. इंसान empathetic है कि नहीं, that Yeah. is very important for me. And And now I that know is why very well after. portrayed from your David Jones experience, because Absolutely. आपको दिखाना पड़ता है सारी चीजें। मैं बहुत बात करती थी, मैं कस्टमर्स, Yeah. मैं बहुत बक 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 चलता रहता था, मतलब आई वुड जस्ट पिक अप एनी रैंडम थिंग एंड स्टार्ट टॉकिंग। Yeah. तो
डेविड जोन्स में होना एक साल, दैट हेल्प्ड अ लॉट. एंड वहां से भी मैंने नेटवर्किंग कैसे किया, यू सी, वन ऑफ दिस, एक आई वुड रीच, ऑब्वियसली मैं 15-30 मिनट पहले पहुंचती थी. आई सिट आउटसाइड द स्टोर एंड जस्ट हैव अ कॉफी और व्हाटएवर. तो वहां पे एक दिन देयर वाज दिस लेडी, शी वाज सिटिंग राइट बिसाइड मी एंड शी वाज स्मोकिंग. तो ऐसे स्मोक के बारे में कुछ बात करते करते we just started talking, me being me, I was just chatty as usual. And as it turned out, her husband was, her husband is, I think he's the, या तो फर्म उनका है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है उनका, या तो ही इज वन ऑफ द बिग गाइस है, ठीक है. Okay. तो वहीं जॉर्ज स्ट्रीट में. Yeah. So she's like, I'll help you connect with him. He keeps taking people in. Nice. And बहुत टाइम बाद आई स्पोक टू हिम. हाँ, it didn't work out because उनको ना वो CA CPA चाहिए होता. Yeah, CA qualification चाहिए होती है. But हाँ again, yeah, nice. Yeah, but core network, like just a हाँ conversation and it led to you one potential opportunity. It didn't work out, but again, हाँ ऐसे leads बनती है हाँ. once you start interacting. तो what I'm trying to say is बात करनी आनी चाहिए. बिल्कुल, you need to know how to talk to people. And वो part time experience ऑस्ट्रेलिया में सिखा ही देता है. Definitely, Yes. definitely. Okay. Yeah. And sometimes I feel कि मतलब I was supposed to move to Wollongong. I didn't. I stayed back here in Sydney. Everything happens for a reason. You हाँ you know it later on, but हाँ. And things eventually fall in place. things eventually. Yeah. But I think you need to keep But trying. You need to keep pushing hard हाँ. when you are here in a foreign country. But I think we have covered a lot of things. Thank you so much. Just one thing, what I think last we will just cover that. What's the career progression looks like, from here. Yes, I And was what are you, just about to come to that. yeah, what's the career progression looks like, and what are you looking forward to, like, transitioning your career? So yeah, so यहाँ पे basically training के time पे, the first day itself we get to you meet a lot of people, and people from the team जो who've been here in this team for what? There was this lady who's been in this team for the past 27 years. She's some big shot, मुझे याद भी नहीं है. ठीक है. She's been in this team for as long as I have been on this planet. ठीक है. तो career opportunities, यहाँ पे opportunities are huge. हमारी खुद की जो टीम लीडर है, शी जॉइंड आई थिंक लास्ट ईयर. एक साल भी मे बी कंप्लीट हुआ नहीं है, जस्ट कंप्लीट हुआ एक साल. एंड शी इज ऑलरेडी अ टीम लीडर. यहाँ पे बहुत फटाफट प्लस ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही यू सिट विद योर टीम लीडर एंड यू डिस्कस व्हाट यू वांट, व्हाट यू आर लाइकिंग. से आपको लेंडिंग पसंद आया, यू लाइक लोन्स, यू लाइक क्रेडिट कार्ड्स, यू लाइक फाइनेंशियल क्राइम्स. देयर इज ऑलवेज अ पाथवे. Yes. I mean, coming to pathways, I forgot to mention this. There will be, I mean, this is for students who, I mean, they are applying. मतलब मेरा तो केस थोड़ा स्पेशल है, मैं बोलूंगी, because transitioning from media to this was exhausting, to put it simply. But there is always a pathway. You just have to sit down and chart out, थोड़ा chart out करना पड़ता है कि हाँ. Obviously, now that I go there and I see a lot of people, 18-year-olds, 20-year-olds, they're excelling, they're doing amazing, they're doing very 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 well. उनको देख के लगता है कि अरे 20 साल में उन्होंने these people are doing so well. I'm दिमाग में आता है. ठीक है. I know what you're saying. I'm still not yet there, but सबकी जर्नी अलग होती है. Yeah, 100%. सबकी जर्नी अलग होती है, सबका. एंड नॉट एवरीथिंग इज गोइंग टू, कभी कभी नाक को ना ऐसे घुमा के पकड़ना पड़ता. ठीक है, सीधे नहीं पकड़ सकते. ठीक है. तो स्टूडेंट्स को यही बोलना है कि yes, there will be dark times. I'm not going to give any pseudo positive, pseudo optimistic, pop psychology Instagrammable advice here. But
But after a dark night, there is always a sunrise. There is. And I believe in that. And I also believe that वक्त जो होता है वो बदलता है. Hmm. So वो हमेशा अच्छा भी नहीं रहेगा और हमेशा बुरा भी नहीं रहेगा. So even if things are happening good, so it doesn't mean वो forever last करेगा. Everyone needs to go through some tough times, through some dark times, but just don't lose hope, because if you lose, And you stay in that dark time. yeah, नहीं, attaining mental peace should be the goal. Yes. There can be there can be मतलब चाहे वो circumstantial हो, चाहे वो whatever the reason is. Hmm. Because if you don't have mental peace, you don't have a clean slate to work on. आपका Yeah. दिमाग काम नहीं करेगा. Yes. So that is key. Perfect. And there is always a pathway. Yes, Always. there's always a pathway. That is the tagline. You just have to keep trying. Opportunities आती है, नए pathways खुलते हैं. There is so much. Like 2 साल में मुझे इतना पता चल गया, अरे ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले, वो कर ले. Like because there are so many things that you can do. But thank you so much, Sonal. I think हमने बहुत ही Thank you. detailed discussion करा है, बहुत ही in-depth discussion करा है. मुझे अब You जाके should have बैठ के seen my notes. Thank you so much for putting that much hard work, right? Effort. I think I've All covered good. everything. So if you think that we have missed something, just let me know. We can just cover that. Otherwise, thank you so much for a wonderful session. How did you find it? And Good, very good. मुझे तो celebrity वाली feeling आ रही है. I think we all are celebrities of our own lives. So what we are trying to share is a life journey, and you are the celebrity of your own life journey. So I feel it like that. And the best thing is you always learn something different from everyone's life journey, and वो हम portray करते हैं. But anything else you would like to cover? Or? Let me just go through my notes. Yeah, 1 second. definitely, no इसको problem. edit करके काट देना. It's natural. We keep it raw. अरे नहीं नहीं ऐसा मत करो. No, I think we have touched upon all of these. Yeah. Perfect. All good. Thank you so much, Sonal. Thank you very much. Yeah, I think we can end the conversation here. I will Yep. stop the record.